Hello everyone and welcome back to another video from Kotak Securities. The first weekend of the new year, the new year 2023 is here. That means it's time for our weekly currency insights. So let us get into it. And एक बार देख लेते हैं कि एक बार नज़र डाल लेते हैं कि इन द पास्ट वीक जो हम लोग का फर्स्ट वीक था 2023 का उसमें करेंसीज का क्या परफॉर्मेंस रहा एंड अगर आप देख सकते हो तो क्लियरली द बायस ऑफ मोस्ट ऑफ द करेंसीज वाज ऑन द डाउन साइड. So जो JPY INR pair था that was down 2.08%, followed by the Euro INR which was down 1.67%. The GBP INR pair was again down 1.35% and जो USD INR pair था that was broadly range bound. मैं आपको explain करूँगा आगे क्या broad range था. So that was down 0.10%, but ओवरऑल अगर आप देखो तो जो करेंसीज का बायस था, जो ट्रेडिंग बायस था या जो सेंटिमेंट था, that was on the downside. Now let us see what were the events that affected the currency movement in the previous week. So for starters, in the first half we had the FOMC minutes. Now initial half में जो हम लोग को volatility का एक exhaustion दिखाई दिया था, that was majorly because जितने भी traders थे उन लोग सब लोग FOMC minutes का wait कर रहे थे. Now the reason being everybody is curious about what the Fed's next move is going to be. एंड हर जो क्यू होता है, जो फेड का मूव हमें पॉसिबली एस्टिमेट जो दे सकता है, ट्रेडर्स विल बी वेरी फास्ट टू रिएक्ट टू दैट एंड ये वही हुआ. सो FOMC मिनट्स वाज ब्रॉडली इन लाइन एंड उसमें उन लोगों ने रीआइट्रेट किया कि हाउ देयर focus is majorly on getting the inflation under control and getting price stability, and there was no major surprise coming from the FOMC minutes. And then the focus of the traders shifted to the non-farm employment data and unemployment claims. ये जो दो job data है, this is crucial. Now एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो job data है, that is a leading indicator for inflation. Because अगर job market strong रहेगा, people will have more money, they'll demand more, and उससे inflation बढ़ने की possibility है. So that was another cue of what the Fed could do. मतलब वहाँ से भी एक trader को gauge मिल सकता है कि Fed आगे आने वाली meeting में क्या करेगा. So जो डेटा आया that suggested that the employment market is strong and बड़े कंपनीज ने भले ही जॉब कट्स किए हो, बट जो छोटे कंपनीज थे, जो छोटे बिजनेसेस थे, स्पेशली ऑन द लीजर देन हेल्थ सर्विसेज, वहाँ पे हम लोग को एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ अच्छा खासा दिखाई दिया. एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की अगर हम लोग बात करें तो दैट वाज आल्सो डाउन एट आई बिलीव द 3 month लोज में एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आया. सो इसके वजह से क्या हुआ, द ट्रेडर्स स्टार्टेड बिलीव speculating that this might push the inflation higher and eventually this might push the Fed to increase rates even further. So जिसके वजह से हमें एक डॉलर इंडेक्स जो था वो हमें देखने को मिला कि वो 105 के ऊपर गया एंड इसका जो ऑपोजिट इफेक्ट था वो हम लोग को बाकी करेंसीज में भी दिखाई दिया. So now technically what has happened, the dollar rupee pair continues to be in a range 83 के पास उसने रिजेक्शन लिया है एंड लेते आ रहा है. ड्यूरिंग द वीक वी सॉ अ कपल ऑफ डेज जहाँ पर वो स्लाइड ब्रीच कर गया एंड क्लोज भी दिया था, बट देन इट अगेन रिवर्टेड एंड गॉट बैक इनटू दैट 8250 83 जोन. सो ब्रॉडली अगर हम लोग देखें तो फ्रॉम आई बिलीव मिड दिसंबर और आई वुड से अर्ली दिसंबर से लेके अभी तक देयर हैजंट बीन मच मूव इन द डॉलर रुपी पेयर. नाउ कमिंग ऑन टू द यूरो INR. सो अगर यूरो INR आप देखो, सो इसने रिजेक्शन लिया था समवेयर अराउंड 88-90 लेवल्स, 88-90 और लेवल्स के वहाँ पर एक सेकेंड टाइम भी उसने ट्राई किया था, दैट वाज अर्ली 2023 में. इट अटेम्प्टेड टू ब्रीच अबाउट दैट बट फेल टू डू सो. वहाँ से इसमें एक करेक्टिव फेज में चला गया पेयर एंड बिकॉज ऑफ दैट वी सॉ द पेयर मूव लोअर टूवर्ड्स द 87. अभी प्राइस एक्शन हमें ये बताता है कि आने वाले सेशंस में इसमें करेक्टिव फेज जो है वो कंटिन्यू होगा एंड जिस तरह से थर्सडे का जो डॉलर का मूव था वो भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि यूरो could actually move lower against the dollar. Now, coming on to GBPINR, so in most of our write-ups, in most of our what you call snippets, उसमें हम लोग ये कहते आ रहे हैं कि जो यूके इकोनॉमी है दैट इज इन नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग फेस नाउ. देर इज लूमिंग रिसेशन, देर इज मल्टी डेकेड हाई इन्फ्लेशन, प्राइस प्रेशर्स बहुत ज़्यादा है विच इज़ फोर्सिंग द सेंट्रल बैंक टू रेज द इंटरेस्ट रेट्स डिस्पाइट द इकोनॉमी बीइंग इन अ रिसेशन. एंड एट द सेम टाइम हम लोग को USD GBP जो USD GBP जो पेयर है,
सॉरी द जीबीपी यूएसडी जो पेयर है उसमें एक कहीं ना कहीं एक अपमूव दिखाई दे रही थी. द मेजर रीजन बिहाइंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनिंग डॉलर अगेंस्ट द डॉलर. जो पाउंड का जो अपमूव रहा है वो was majorly because of the softening dollar. अभी when the dollar is showing slight moves upside इसमें आप देख सकते हो the reactions are way faster in the pound. So GBP INR पेयर में भी हमें कहीं ना कहीं यही देखने को मिला है. So around 10250 is where it faced rejection and वहाँ से since I believe late December we have been seeing the GBP INR pair in a correction. Now प्राइस एक्शन हम लोग को यही बता रहा है कि यू नो द करेक्शन कुड एक्चुअली कंटिन्यू एंड द फैक्ट दैट द डॉलर इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर is also hinting that on the downside the correction there is still more room on the downside. Okay, so now coming on to the JPY INR pair. Now अगर आप हमारे राइटअप्स अगर फॉलो कर रहे हो, if you are following our telegram channel, so आपको पता होगा कि there have been unscheduled bond buyings. Now this has definitely given the yen a bit of strength and अगर आप देख सकते हो तो the JPY INR pair actually moved higher towards the 64 mark. एंड अगर मैं यूएसडी जेपीवाई की बात करूँ तो उसमें हमें गिरावट दिखाई दी थी टुवर्ड्स द 129.5030 लेवल्स के पास. मतलब अराउंड 129 लेवल वो गया था. वहाँ से देयर वाज अ शार्प बाउंस. नाउ ये शार्प बाउंस आया था आफ्टर द एफओएमसी मिनट्स, आफ्टर द एनएफपी डेटा वाज आउट, बट दैट वाज मेजरली टू डू विद द स्ट्रॉन्गर डॉलर. बट जेपीवाई आईएनआर में जो अपमूव हम लोग को दिखाई दिया था दैट वाज मेजरली बिकॉज ऑफ द अनस्केड्यूल्ड बॉन्ड बाइंग्स. अभी ऐसा हुआ कि some of the analysts who have been tracking the FX or the macroeconomics, they considered this to be kind of a starting point for a pivot of a pivot by the BOJ. So that was the reason behind the strength in the yen, and we saw a massive move from I believe a lows of 55 odd levels in the month of November or early December, and वहाँ से जो up move start हुआ था वो 64 level पर कहीं पर आके halt हो रहा है. Now the price action is definitely showing that there is space on the downside. 6128 तक का space अभी हमें दिखाई दे रहा है. But we'll see how the prices react around that level. But all in all ये भी कहीं ना कहीं एक अपमूव जो था like all other currencies इसमें भी एक अपमूव हमें stall होते हुए दिखाई दे रहा है and we might see a bit of correction in the JPY INR pair as well. Now, coming on to what will be the events that we'll be looking for in the coming week. So there are four major events. So starting off with the Fed chair giving his speech. Again, as I mentioned earlier, the traders will be looking for hints and cues about the Fed's next move because the Fed has literally not mentioned anything about its next move. So that will be something that the traders will be watching for, and followed by that, the next data we have the US CPI data, and then we have the UK GDP data that will be very crucial to watch for because last print iska it showed that the UK GDP was actually kind of the UK's economy was kind of contracting, so that will be something important to watch for. And then we have the UOM consumer sentiment data. Now coming on to the biases and the range. So अगर डॉलर रुपये की मैं बात करूँ तो वी एक्सपेक्ट इट टू बी रेंज बाउंड एंड बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी एक्सपेंशन इसे थोड़ा हेडरूम और अगर लेग रूम हम लोग दें तो दैट द ब्रॉडर रेंज कम्स टू अबाउट 82.29 टू 83.19, या इसको राउंड ऑफ करना है 82.30 से लेके 83.20 तक इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट द ब्रॉडर रेंज टू बी. Now, as I mentioned, Euro INR, GBP INR, JPY INR, all of them are actually hinting towards a possible correction, and that would suggest the bias, our bearish bias on all the currencies. So, अगर Euro INR की मैं बात करूँ तो 86.54 on the downside, 87.74 on the upside is what we expect the range to be. And GBP INR की अगर मैं बात करूँ तो 97.78 or 97.80 on the downside. And on the upside, we might see resistances come around the 99.40, 99.50 level. Now coming on to the JPY INR, as I mentioned, 61.28 का वहाँ पर एक support दिखाई दे रहा था, so 61.30 is somewhere that we could find support. And on the upside, 62.30 के पास इसमें हमें एक support दिखाई दे. So that's all for the weekly currency insights this week. See you all next week. Till then, stay safe, trade safe, and do subscribe to our Telegram channel if you want continuous updates, and also subscribe to the Kotak Securities channel so that you get notified every time we put up a new video. Thank you.
Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.